ईरानी सुप्रीम लीडर ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ एक पहुंचिया है दरबार साहब। अज इस हवाले ना वीडियो है, पहले वीडियो देख लेने फिर करने इस ते गलबात। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जावेद अज अमृतसर सचखंड श्री दरबार साहब पहुंचे है। SGPC के अधिकारियों नाल मुलाकात कर रहे हैं। SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी होना दे नाम एक न्योता पत्र भी सौंपया गया है। Our supreme leader got martyred, and we do believe, as our brothers in the Sikhism, they also do believe that Shaheed is alive, and we would like also to appreciate the stand of the Punjab Parliament. ये दिन में लोगों के सामने दावा करता है और रात में हमारे सामने भीख मांगता है। जितना नुकसान जो गुज़श्ता साल हमारे ईरान का हुआ था और ये साल जितना नुकसान हुआ उसके अमेरिका को पहले हमें नुकसान देना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर दफ्तर नाल संबंधित वफद के मैंबर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जावेद अज अमृतसर सचखंड श्री दरबार साहब पहुंचे है। तस्वीर एक बार तुहाडे नाल साझी करते हैं। उन्हां वल्लों सचखंड श्री दरबार साहब विच मत्था टेक के जिथे सरबत दे भले दी अरदास की जाएगी, उस दे नाल ही दस दईए कि डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जावेद जो है वो दरबार साहब स्थित इनफॉर्मेशन दफ्तर दे विच SGPC दे अधिकारियों नाल मुलाकात कर रहे हैं ते उस तो बाद उन्हां वल्लों SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी होना दे नाम एक न्योता पत्र भी सौंपया गया है। इस दे नाल ही दस दईए कि दिल्ली विखे होने वाले खास समागम लई यह न्योता उन्होंने दिता गया। इस दे नाल श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं भी एक सद्दा पत्र भेजिया जाएगा। तां गलबात जिहड़ी है उन्हां वल्लों मीडिया दे नाल भी कीती जाएगी। उस दौरान जानने की कोशिश करांगे कि की कुछ कहना है उन्हां दा इस बारे ते जो अमृतसर उन्हां दी सचखंड श्री दरबार साहब जो अज पहुंचे है उस नूं लैके उन्हां दा की कुछ कहना है। To the Golden Temple or to the Darbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to give my greetings and salam to all the audiences. And the purpose of this visit was to invite the officials and the leaders and the president of this very great Gurdwara, and that is President Harjinder Singh Sahab, that we requested him through his PR to come to the commemoration program that we are going to have on 12th April in Iran Culture House for the martyrdom of our leader, Sayyidina al-Qa'id Hazrat Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei Rizwanullah Ta'ala alayh, who assassinated with the attack of the invaders on the Islamic Republic of Iran while we were in the middle of negotiation. They attacked and they assassinated him. Of course, we do believe that Shaheed is alive and he got martyred. Our leader, our supreme leader got martyred, and we do believe, as our brothers in the Sikhism, they also do believe that Shaheed is alive and Shaheed is eternal and he is joined to the Almighty. And we see that the more that is time is passing from the martyrdom of our leader, more number of people are getting familiar with him, with his virtues, with his personality. And on the Sunday, 12th of April, we will be having the 14th day
for the commemoration of his martyrdom. And the purpose of this visit was to invite the president of this great the president HTPC, or President Harjitwar Singh. Yes, am I right? President Harjinder Singh. Uh, we wanted to invite him as the guest of honor to come and benefit us from his notable words. And we would like also to appreciate the stand of the Punjab Parliament, that they stood with us, they condemned the assassination of our leader, and they uh, issued a resolution for this purpose. This was the second purpose of this visit. We really appreciate your stance, and we understand that this comes from more than 5,000 years relationship that India and Iran have been having with each other, and we are sure that this relationship will go on and will go on, and inshallah will promote day by day. The current situation in Iran, is the situation during ceasefire. What do you think about ceasefire? Ceasefire is the situation in which you have not stopped the war. If the war doesn't So- stop, what form would be? Sorry? If the war doesn't stop, the what form would be? There are 10 conditions that are proposed by Iranian officials, and to the point that these 10 conditions are observed, then we can say that and also a very strong guarantee would be given by UN and also Security Council that the break of these, peace treaty that will be there won't take place. There is no break, and those ones who have attacked Iran, they will be committed this time to their promise, because we do not need temporary ceasefire. We tested it. We were in the middle of negotiations 10 months ago, and they attacked us, and they killed our people, and they assassinated some of our officials. We also responded to them. They asked for ceasefire that time, but after 10 months, they again attacked us, again in the middle of the negotiations. So this time, we do not need this type of, so-called ceasefire. No. If there would be a ceasefire, there should be a permanent ceasefire that is a peace treaty with sufficient guarantees that makes Iranian nation assure that their rights are observed, and the compensation of the casualties and the problems that have been occurred and have been put on Iranian nation, it should be there. And if something like that be accepted and be guaranteed by UN and by the Security Council, then at that point we can say that permanent peace have come to the entire region. Of course, we are not happy with war. We understand that the prices in different parts of the world have been increased. We understand that people around the world are suffering from this war. We understand that there are some problems for daily life. But we also urge everyone in the world to understand the situation in which these days Iranian nation are suffering from and tolerating. Every day and night, bombings were there, and in different places, our hospitals, our schools, our universities, our schools, our mosques, and the places that are civilian places, residential areas, were targeted many times. The day before yesterday in the city of Qom, 9 people were killed in a residential area.
some days before that again in Tehran, different cities. And in the beginning day of this war, 168 students in an elementary school, girls, innocent girls, they got killed. So this war has crossed every individual rule of international law, morality, norm, and nothing is remained that they want to cross. I do not know how they want to say that we want to, you know, have peace in the world while they allow themselves to attack and kill innocent people. So we understand that the world is suffering from difficulties, but we urge the world to understand Iranian nation situation and the difficulties that they are suffering. You know, the price of gas is increasing in the world, but the price of the life of human beings is very, very, very cheap nowadays in Iran. And by a bomb, 150, 40, 10, who knows, of people get killed. So yes, last night, because the arrogant president of the United States, he accepted the conditions, and he clearly stated that he has accepted the conditions of the peace treaty. So a ceasefire has been approved and announced, but the situation is fragile, the situation is not stable to the moment that we receive the guarantees. Tomorrow after that announcement, he says that I had some negotiation with Iranian officials. So if Iran has been removed from the map, so why there would be a negotiation? So such person for sure is not receiving a trust. So that's why we need international guarantees, because we tested this way some time ago, 10 months ago, and we had the ceasefire with them, but they were not committed and they were not, truly fulfilled it. So this time again, there is no, I can say that there is no trust, but we really want to have peace in the region and to stop this aggression that is against Iran. We really want it to be stopped, and we really urge every country, every nation, every individual person on this planet in the world to come forward and to take the responsibility of bringing peace in the region and in the world. Thank you. Excuse me, one thing मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था कि ईरान एक 5000 साला सिविलाइजेशन का मुल्क है और ईरान के पास 5000 साल की तारीख मौजूद है और इंतहाई कदीम मुल्क ईरान है, और कहा कि ये ईरान का आखिरी दिन है। कल जो सुबह होगी 5000 साला तारीख का मुल्क का खात्मा होगा और ईरान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ये दिन में लोगों के सामने दावा करता है और रात में हमारे सामने भीख मांगता है कि हमें बचा दो, हमें जाने दो और हम जंग बंद करो, हम जंग बंद के लिए तैयार हैं, है ना। हम कहते हैं जितना नुकसान जो गुज़श्ता साल हमारे ईरान का हुआ था और ये साल जितना नुकसान हुआ उसके अमेरिका को पहले हमें नुकसान देना पड़ेगा और हमारे 10 कंडीशन को मानना पड़ेगा, और इसके लिए हमने 10 दिन की मोहलत दी है। सीज़फायर नहीं हुआ है, ईरान ने अमेरिका को मोहलत दी है 10 दिन के लिए। अगर 10 दिन तक वो हमारी 10 कंडीशन को नहीं मानेगा, 11वें दिन ईरान भरपूर तादाद में जितना हमने मिसाइल मारा है उससे 100 गुना बढ़ के मिसाइल हम अमेरिका पे भी मारेंगे, इसराइल पे भी मारेंगे, जो भी उनका साथ है उन पे भी मारेंगे। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਯੋਤਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ 10 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ईरान ਜਿਹੜਾ 11वें दिन दोबारा जो है अमेरिका के उपर अटैक कर सकता है। जिस तरीके पहला ईरान ने अटैक किया है, पहला मिसाइल दागियां, उस तो वड्डी गिनती दे विच दोबारा जिहड़ियां मिसाइल है वो ईरान वालों दागियां जाणगियां। इस दे नाल ही उन्होंने वख-वख देशां दे प्रेजिडेंट अगे भी अपील की कि वो ईरान का सहयोग करन। अगर वो ईरान का सहयोग नहीं करनगे तो आने वाले समय में ईरान उन्हां देशां दे उपर भी हमला करन नूं मजबूर होवेगा जो अमेरिका का साथ देवेगा। फिलहाल उन्हां वल्लों दिल्ली दे विच एक समागम दे लई जो है न्योता पत्र देण लई सचखंड श्री दरबार साहब पहुंचे सन, जिस दौरान उन्होंने SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के नाम से एक न्योता पत्र SGPC के अधिकारियों ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ईरान ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ईरान ਆਓ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ ईरान ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ईरान ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ईरान ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ईरान ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।